तो अभी हमने एयर फिल्टर रिप्लेस किया है स्कूटी पेप का। और जब भी दोस्तों आप एयर फिल्टर रिप्लेस करेंगे तो आपको उसके साथ और एक काम करना है, वो है इस वैक्यूम को भी क्लीन करना है। इसको भी अंदर से एक फोम रहता है, ये देखिए इसका पाइप है और इसका कनेक्शन सीधा वैक्यूम से रहता है। ये देखिए यहाँ पे ये सीधा वैक्यूम से कनेक्टेड रहता है। तो अगर ये डर्टी हो गया इसका फोम तो भी आपको पिकअप में थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो इसे साफ करने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा, ये साइड का फेंडर वगैरह निकालना पड़ेगा।